Yes, hello, good morning. Good morning. I am fine. What about you? Yes, good morning, Sidhu. Good morning, Uddhav. Yes, good morning, Dishu. How are you all? All is well. So, students, in today class, we will discuss Q data structure. Student, this is my Telegram ID, right? This is both my Telegram ID. You can join both Telegram ID for notes and discussion, technical discussion, right? So, now today we are going to discuss about Q data structure. Okay. So what is Q, student? Yes, good morning, Melodious Sophia. Good morning. Yes, good morning. Okay. वॉइस लो आ रही है उद्धव? यस स्टूडेंट, वॉइस क्लियर आ रही है? FIFO, yes, FIFO is the restriction. Q, it is a data structure used to store the data element with the restriction of first in, first out. What is Q, student? Q, it is a data structure just like a stack type का, but the restriction here is first in, first out. जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, right, student? So Q, it is a data structure used to store the data element with the restriction of first in, first out. Sir, how Q is first in, first out? Because in Q we are using two pointer, student, front and rear. Front is used for deletion and rear is used for insertion, right? So there are two separate point, one point for insertion that is known as rear, and another point is front. Front is used for deletion, okay? So, deletion. So if you perform in real life, in anywhere, if you perform insertion at one end, deletion from different end, then this always behave just like a what, sir? First in, first out. Understood? यस यस बिल्कुल उद्धव, कल टाइम नहीं मिला, आज डेफिनेटली करूंगा 100%. कल थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था. ओके. यस उद्धव, आज करूंगा. बाकी के स्टूडेंट भी रिपोस्ट कर सकते हैं बच्चे, बाकी जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो भी रिपोस्ट कर सकते हैं लिंक्डइन पे. ओके. सो in Q we will use two pointer, student. Here we will use two pointers. Front and rear, student. Front is used for what's a deletion. Deletion is known as dequeue operation, right? And a rear is used for insertion. It is just like this is known as enqueue operation. Okay, in Q. Understood, students? So that's why Q क्या है? First in, first out. Q is what, sir? First in, first out. Okay. This queue just like a queue of people waiting in a line, right? जब आप लाइन बनाते हैं ना बच्चे, जस्ट लाइक ए लाइब्रेरी, बुक बैंक, या फॉर टिकट रिजर्वेशन और फिर मूवी टिकट लाइन. सो दिस क्यू जस्ट लाइक ए क्यू of people waiting in a line, right, student? So this is front here, this is front and this is rear. Okay, there are two separate pointer. If you want to increase the line, student, if someone come, right, then sir, first increase sir rear here and then insert, then rear is pointing to this one, then rear is pointing to this one. If I want to delete button, अगर इसको टिकट मिल गया, ये बाहर हुआ बच्चे, then this front is pointing to what? This one. So deletion at this point
student, this is used for deletion or dequeue, and this is used for insertion. Okay, student. So now, conclusion of the story. What is queue? Queue, it is a data structure used to store the data element with the restriction of first in, first out. Right, student? So, for example, this is queue, student, right? Initially, this front is pointing to, let's suppose, this one, and rear is pointing to this one. Okay. So, let the element is 10, 20, 30, sir, 40, 50, 60, and 70. Understood? So, if I want to insert one more element, then you insert from where, sir, student? You insert from rear. So first you have to increase rear insertion or enqueue from rear in insertion, or we can say enqueue. कहाँ से होगा बच्चे? rear point से. So first increase rear, sir, rear equals to rear plus 1 and queue rear per you can insert any item or value. So let first increase this one and you insert value here 80. Okay. Similarly, I want to delete from here. So increase front is student. Front just increase. So front equals to front plus 1. Okay. So this element is deleted, student. This 10 is deleted. You cannot access this. Okay. Understood? So conclusion of the story. Sir, like element 10, 20, 30, 40, 50, and 60. So here front is pointing to this one and rear is pointing to this one. Okay. This is Q. Okay. Sir, if I implement this one, अगर मुझे कोई इम्प्लीमेंट बच्चे कुछ ऑपरेशन करना है तो इंसर्ट करना है तो रियर से करेंगे, डिलीशन फ्रंट से करेंगे. फ्रंट कैसे बढ़ेगा डिलीशन के केस में? डिलीशन के केस में फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1 आगे बढ़ जाएगा. रियर इक्वल्स टू रियर प्लस 1 से आप उस पर वैल्यू इंसर्ट करेंगे. अभी हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे. नाउ ये एरे के थ्रू बच्चे, अगर मैं इसको एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट करता हूँ, राइट? इफ आई टॉक अबाउट लिंक लिस्ट, so how we can implement this queue via linked list बच्चे? So this is a single linked list बच्चे, right? And data here is like 10, sir 20, 30, 40, sir 50, 60. So बच्चे, if I want to implement this queue by a linked list, then one advantage, sir, in array you cannot increase the size of this queue. If you implement through array, you cannot increase or decrease the size of this queue, student, right? Whereas if this queue is implemented by a linked list, then you can increase or decrease the size of this queue, right? But sir, if I want to implement queue by a linked list, then where is front and where is rear? This is my question, student. Let's suppose this is tail pointer. Tail is pointing to this one, or this is head. Head is pointing to first node.
सो वेयर इज रियर बच्चे, वेयर इज फ्रंट, बताओ सर। इफ आई टेक, बच्चे इस बात को समझिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। फर्स्ट, if front set to head, if front set to head बच्चे, first point, if front and rear both set to sir head, if front and rear both set to head, then what is the problem? What is the problem here, student? If front and rear both set to head, then what is the problem? Sir, if both pointers set to head, then you are inserting and deleting both at the same end. So this is just like a stack, not queue, बच्चे. So in this case, it behaves just not FIFO, not FIFO, बच्चे, not FIFO, but the queue is FIFO. So this is wrong implementation. Second, sir, if front and rear both point to sir tail pointer, then what is the problem here, sir? If both is pointing to tail, then the problem is what, sir? Again sir, this is not FIFO, right? Because same end say, so this is not FIFO. बट फर्स्ट वाले केस में सर दिस इज नॉट FIFO, बट NQ एंड DQ ऑपरेशन की कॉस्ट यू आर इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग एट द फ्रंट. सो फ्रंट से डिलीशन इंसर्शन लिंक लिस्ट, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ 1. सो हियर NQ and DQ both complexity is order of 1. Sir, this is correct, but the problem here, this is not FIFO. Whereas in second case, sir, front and rear both point to tail, then this is not FIFO, as well as NQ operation cost is order of 1. Sir, I want to insert from tail in a linked list, bache. Sir, what is the time complexity? I want to insert in a linked list at the end, and tail is pointing to this one. Just create a node and just update this pointer. It will take order of 1 time for NQ. Whereas in DQ, bache, it will take, sir, DQ के लिए you have to traverse this linked list from here to here, because this is a single linked list and one pointer you have to set here. And after this, temp connects equals to none. So DQ take order of this, and so this is also problem, right? So that's why this is not, second is also not good implementation. Okay. What about third case? Sir, if rear set to head, if rear set to head and sir front set to sir tail, in this case, sir front set to tail, sir, in this case this is FIFO. You can make this FIFO, but the problem here in third case, what is the problem, student? In third case, what is the problem here? Sir, this is FIFO, but the problem is what, sir? DQ operation cost is order of n. DQ cost is again order of n. So this is again problem. Sir, what is the solution? फिर इसका क्या solution है? बोलो भाई. एक काम और one more case, बच्चे, fourth case, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ. Fourth case, sir, if front is head, front point to head, and sir, rear set to sir tail pointer, then this is good, student, good approach. कैसे? Sir, if in this case this is FIFO, in this case this is FIFO as well as what, sir? FIFO के साथ साथ sir NQ operation, NQ is order of 1 because you are inserting from this here, and DQ operation cost is DQ and deleting from beginning, so order of 1. So this is correct, student. Okay. So conclusion of the story, bache, let's conclude it. Sir, in linked list implementation, front is set to head, यानी front किस पे होगा बच्चे? Sir, head पर होगा. So front is pointing to this one, and rear is set to tail.
रियर इज सेट टू टेल, इस रियर इसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। सो इन दिस केस सर एन क्यू, दिस इज FIFO as well as FIFO as well as enqueue and dequeue. enqueue and dequeue operation cost is order of 1. Okay student, तो हम कह सकते हैं कि front is also known as what sir head, front is also known as what sir head, if you rear is also known as what sir tail, okay, back pointer. So this is Q बच्चे. Now implementation of queue in simple linear queue. First I am talking about simple linear queue, how we can implement simple linear queue, student. So there are two approach again sir, via you can implement through array, or in Python you can implement through list, or right, there are several methods. So here I am discuss array first in respect of C programming, right, array. So array implementation means allocate memory, right, and apply this restriction FIFO, and it will become what sir, queue. Similarly, allocate memory through linked list and apply this restriction bache, and this will become what sir, queue. Understood. So let first discuss using array. This is macro. The student has defined an integer q n 7. So what does it mean, student? Q is the array name, and integer, all elements will be integer, and size of this n is 7. Okay. Let I consider first implementation. If initially front equals to -1 and rear equals to -1, initially front equals to -1 bache, and rear equals to -1, right? So how we can perform enqueue operation and dequeue operation, student? So for enqueue के लिए first you have to write what sir? You have to first increase rear, rear equals to rear plus 1, and second sir, q rear पर you can insert value. Okay. But sir, during first insertion, if you insert first element, then front is also set to sir 0. If you insert first element, then front is also set to sir 0, and after that only rear is moving, right? So you have to take care about the first insertion. You have to take care about first insertion bache, as well as last deletion. In this method, you have to take care about first insertion as well as last deletion. What is this sir? We'll discuss shortly bache. You have to take care about first insertion and last deletion. Yes sir, what is this? We'll discuss, student. We'll discuss shortly. Okay. First insertion means what? Sir, when you insert first element, then first set front to 0, right? Sir, how we can detect this is the first insertion? So initially, I take initially both front equals to -1, rear equals to -1. It is compulsory? No, it is not compulsory. Initially, you can take any value, right? It is up to you, but it must be a first in, first out. Okay, student. So let I consider initially front equals to -1, rear equals to -1. Okay. So if first insertion, if I want to first insertion, if first insertion, student, then set front equals to 0. Sir, how we can detect this is the first insertion? So for this, check this condition bache. If front equals to -1, if this condition is true, then this is the first insertion, and right here what sir, set front equals to 0, set front equals to 0. Okay. So initially bache,
यहाँ पे बच्चे फ्रंट अभी क्या है, इधर देखिए, initially front equals to -1, rear equals to -1. Now sir, I want to insert element. So enqueue, if rear equals to -1, then first what you have to do, you have to just increase rear. You have to just increase rear. First you have to do this work. Rear equals to rear plus 1. Sir, what is rear? Rear is 0. Then rear is set to what, sir? Rear is pointing to, sir, this 0. And check, sir, one more condition, कि if front equals to -1 है, sir, during first insertion, yes, so set front equals to 0 also. Set front equals to 0 also. And then you can insert q rear value. So let I insert first value is 10. Okay, fine. Okay, sir, done. Next, sir, I want to insert one more element. Sir, then first increase what, sir? Rear equals to rear plus 1. And after this q rear पे value insert कर दीजिए. Sir, first rear increase हुआ and q rear पे this value is 20. Sir, I want to insert one more. So first update this rear equals to rear plus 1. q rear पे value insert कर दीजिए. Let this is 30. I want to insert one more. Sir, rear equals to rear plus 1. So rear को first increase rear and value insert. I want to more, sir, rear increase होके this one 50. Sir, I want to insert one more. Sir, rear increase हुआ, this is 60. Sir, I want to insert one more. First increase rear and q rear पे value insert कर दीजिए. So finally बच्चे rear is pointing to this one and you are inserting value 70 here. Okay. Dear student, I want to insert one more element. Can I insert one more element? Yes, everyone reply. Because I am implementing through array. Can I insert one more element, student? Can I insert one more element? Yes, student. No, bache, because this queue is entire queue is full. So queue full, or we can say overflow. What is queue full or overflow condition? If, sir, rear equals to max -1, sir, if rear equals to max -1, if this condition is true, rear equals to n-1, this queue, entire queue is full overflow condition, right? Due to fixed memory location. Yes, Lucky, because I am implementing through array. You cannot insert. So this is overflow condition. Understood, student? Okay. Now, sir, I want to perform dequeue operation. So here front is 0, student, front is 0. So I want to perform dequeue. First step, sir, first step, y equals to q front. Y variable में assign front value. Second step, sir, increase front equals to front plus 1 and return deleted item. Sir, front equals to front plus 1. And third step, return deleted item. So सर फर्स्ट ऑफ ऑल बाई में क्या आया बच्चे, क्यू फ्रंट. व्हाट इज क्यू फ्रंट पे क्या वैल्यू है बच्चे, सर 10. And front equals to front plus 1. So front equals to front plus 1. Front is pointing to this one and this element is deleted. You cannot access this element, student, right? And return deleted item, you can return print or return deleted item 10. Fine. Sir, I want to delete one more. So what you sir, delete one more. So front 1 हो गया बच्चे. Delete one more के लिए sir y equals to q front. Sir q front पे now next value is what, sir, 20. And front equals to front plus 1. So if you perform front equals to front plus 1, so front is pointing to this one. So this element, you cannot access this element is deleted, right? And return deleted item. So in this way, you can perform delete operation, you can perform dequeue in simple linear queue, right? Similarly, front is pointing to this one, this element is deleted, front is pointing to this one, this element is deleted. Just increase front, bache, this element is deleted. Understood? Now, sir, front is pointing to this one. This element is deleted. Understood? Now, the scenario is what, sir? After this, बच्चे क्या scenario हुआ? Sir, all element deleted. Sir, these all element deleted. And now front is pointing to what, sir?
sixth position, sixth look index. Now front is also pointing to this one. Can I insert one more element here, student? Yes, Lucky, Uddhav, Siddhu, everyone reply. Can I insert one more element here? Yes, student. No, my dear, because rear is pointing to this one. In simple linear queue, you cannot insert here because rear is n minus 1. So you cannot insert element here, student. Understood? So entire this left side is completely this is blank. You cannot insert, you cannot utilize this memory. This is the limitation of simple linear queue. How we can utilize this memory? With the help of circular queue, student. We'll discuss shortly. Okay. So this is the limitation of simple linear queue. Now, finally, sir, I want to delete this 70 also. Then can I delete this normal procedure? Can I delete just like this normal procedure? Sir, if you perform just normal procedure, sir, front equals to front plus 1. So if you, this one, front equals to front plus 1. So my dear student, front is pointing to what, sir? Front plus 1, say this is 7. And rear is pointing to what, sir? Rear is pointing to 6. Then what will happen, student? This element is deleted. And front is pointing to what? Sir, front is increase, okay, 7 and rear is 6. Can I insert one more element here, student? Yes. Can I insert one more element? No, sir. You cannot insert because this is generate what, sir? Overflow condition. You cannot insert. So it means what? You are doing wrong, bache. If you delete last element not deleted just like a normal procedure, right? Right? Because front is 7, student. Out of bound front is set to 7, rear. This entire queue is empty. So this is wrong. This is wrong. Don't do like this, student. So if you want to delete last item, then you have to take care, special take care about. Similarly, just like if you insert first element first, then set front equals to 0. If you delete last element, then you have to take care about the last deletion. How we can find this is the last deletion? You have to find single element, student. How we can detect single element, student? Single element कैसे detect करेंगे बच्चे? Sir, if front equals to rear, this condition is true, then this is a single element, right? If you want to delete this element also, then set front equals to -1, rear equals to -1 at initial condition. If you delete last element, then set front equals to -1, rear equals to -1, right? Initial position, initial condition pe. So yes, sir, this is the last element, front equals to rear. So for last deletion, for last deletion, बच्चे, set front equals to what, sir? -1 and rear equals to -1 again. Okay. At initial position. For last deletion के लिए, how we can detect last deletion? This तरह से, if front equals to -1. In this way, you can detect this is the last deletion. So you have to take care about बच्चे. You have to take care about what, sir? Sir, first insertion as well as for what, sir? Sir, as well as for last deletion. दोनों का आपको take care करना पड़ेगा बच्चे. Right? Okay. So in this way, you can delete this 70 also. Okay. Then front and rear both set to what, sir? This is deleted, and front and rear both set to
front and rear both set to -1, this initial condition. Okay. Okay, fine. Now again, if you want to insert element, then you can insert element, you can utilize this whole memory. Okay. Sir, what is underflow condition? So this is underflow condition or queue empty condition, बच्चे. क्यू एम्प्टी कंडीशन के लिए यू कैन चेक आइदर फ्रंट इक्वल्स टू -1 और यू कैन चेक आइदर फ्रंट रियर इक्वल्स टू -1 और यू कैन चेक बोथ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट, बिकॉज बोथ एट ए सेम टाइम बोथ इज -1. सो फर्स्ट कंडीशन, you can check front equals to -1 or you can check sir rear equals to -1 और यू कैन चेक बोथ बच्चे, यू कैन चेक बोथ, राइट, आप दोनों को चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. अंडरस्टूड. So you can check both. This is the underflow or Q. Either front equals to -1 or rear equals to -1 or front equals to -1 and rear equals to -1 because both at a time, both is -1. So this is underflow condition, right, student? Fine. Now I insert 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Here rear is pointing to this one and front is pointing to this one. Okay. If I delete like 3 element, then front आप अगर आपने delete कर दिया, front is front +1, so front इसको point करने लगा. Now the next question, number of element in the queue, student. How many number of element, total element in the queue? Yes, tell me. Length of queue, yeah, total elements in the queue. बताओ भाई कितने एलिमेंट हैं? Is there any formula? Total number of element in the queue? बोलो भाई. सिद्धू, लकी, उद्धव. Sir, upper bound minus lower bound +1. You can use this formula. Sir, rear minus front +1. यही formula होगा बच्चे. Can I use this formula? Yes, sir. But this is except for initial case. Initial case में this is not work. Initial case means what? If front equals to -1, rear equals to -1. If you substitute here, if front equals to -1, rear equals to -1, it will get 1. But initial case, entire queue is empty. So आप लिख लीजिए यहाँ पे except for initial case. Except for initial case बच्चे, ठीक है? Except for initial case, initial छोड़ के rest of all this work fine, student. 6 minus 2, sir, 6 minus 2, 4 plus 1 is 5 number of element. Rest of all cases it work fine. Understood? Okay. Fine. So this is simple queue, बच्चे. Sir, is there any better code? Can I remove this one, student? क्या in this implementation you have to take care about both, sir, first insertion as well as last deletion. Can I improve this code? Little bit improve code, student? Yes, sir. If we set front equals to, sir, 0 or rear equals to -1, another implementation, बच्चे. This implementation is correct, no problem at all. But extra you have to write this code for first insertion. You have to write this code, front equals to -1. If front equals to -1, set front equals to 0. And this formula is not work for every cases. Except for initial case को छोड़ के सभी जगह वर्क करेगा. तो कोई improvement version है सर इसका? Yes.
this is the improvement version. If I take front equals to 0, rear equals to -1 student, then no need to take care about the first insertion, but you have to take care about last deletion बच्चे. ओनली यू हैव टू टेक केयर अबाउट लास्ट डिलीशन, फर्स्ट इंसर्शन का नहीं है बच्चे. बाकी की कहानी सेम है बच्चे, बाकी सब सेम होगा. सर कैसे होगा? वही सेम प्रोसीजर है बच्चे. फर्स्ट इंक्रीज रियर इक्वल टू रियर +1 एंड सेकेंड क्यू रियर पर यू कैन इंसर्ट वैल्यू. ओके, ओवरफ्लो और फुल कंडीशन क्या होगी सर? वही होगी जो हमने अभी डिस्कस किया. इफ रियर इक्वल्स टू n-1, यही ओवरफ्लो कंडीशन है, कोई चेंजेस नहीं है बच्चे. रियर इक्वल्स टू n-1. सर डिलीशन कैसे होगा? डिलीशन के लिए फर्स्ट बाई इक्वल्स टू क्यू फ्रंट, सेकेंड फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट +1 एंड थर्ड रिटर्न डिलीटेड आइटम. सेम है. सर अंडरफ्लो कब होगा? और empty, you can check either you can take rear equals to -1. You can say if rear equals to -1, rear equals to -1, or second condition, or you can say sir rear less than front. ओके बच्चे समझ में आ रहा है? चलिए इंसर्ट करते हैं. सर आई वांट टू इंसर्ट, तो फर्स्ट इंक्रीज रियर बच्चे, फर्स्ट इंक्रीज रियर, रियर इक्वल टू रियर +1 मैंने इंसर्ट कर दिया 10. सर फॉर सेकंड एलिमेंट सर रियर इक्वल टू रियर +1 की फर्स्ट दिस वन एंड दिस वन लाइक 20. सो रियर यहाँ से फिर यहाँ आ गया. आई वांट टू इंसर्ट वन मोर एलिमेंट, फर्स्ट इंक्रीज रियर सर 30, सिमिलरली सर 40, इंक्रीज रियर, ओनली रियर बढ़ रहा है बच्चे 50, राइट. सो इस तरह से 60 एंड 70. सो रियर इज पॉइंटिंग टू दिस वन. ओके, similarly I want to perform delete operation बच्चे. तो just increase front, this element is deleted, increase front, this element is deleted. Okay, understood बच्चे? So front is pointing to let this one. All is same, but last deletion के case में you have to take care about sir front equals to this one, so this element deleted, front equals to this one, this element deleted, front equals to this one, this element deleted, front equals to this one, this element deleted, front equals to this one. Then what? All is same बच्चे, बस थोड़ा सा अंतर है. So front is pointing to this one. So this all element deleted, right? All element deleted बच्चे. Sir last deletion के लिए you have to take care about last deletion. Okay. How we can detect last deletion बच्चे? If front equals to rear, this is single element or last deletion. Then in this case set what? Initial condition बच्चे. Set initial condition. Sir front equals to what sir? 0 and rear equals to what sir? -1. You have to take care about last deletion बच्चे. In this method you have to take care about last deletion. So front equals to -1, rear equals to -1 हो जाएगा. ठीक है सर, understood.
ओके how many number of element in the queue बच्चे? You can apply this formula. Equals to, so upper bound minus lower bound plus 1. Now in this implementation, this formula is work for everywhere, student, for every cases, right? This work for every case. Understood, student? Now this formula is completely work. Sir, little bit change बच्चे. If initially front equals to 0, rear equals to -1. Whereas in previous case, what, sir? Front equals to -1, rear equals to -1. So in this case, this formula not completely work except for initial case. In this implementation, you have to take care about both first insertion as well as last deletion. But sir, in this implementation, sir, you have to take care about only what, sir? Only last deletion. Only last deletion, बच्चे, right? And this formula is completely work for every case. This formula is work for every cases, right? So ये little bit improvement था इसका, okay? But the problem here is what, sir? If I talk about simple linear queue, limitation of simple linear queue is what, student? I am implementing this simple linear queue. And rear equals to this one. Sir, after this deletion, after some deletion, after some delete operation, this queue like behave just like this one, student. After some delete operation, you cannot insert element here, student. This entire queue is full except for one cases. Still you cannot utilize this memory, बच्चे. Still you cannot utilize this memory. This is the limitation of simple linear queue. Understood? How we can utilize this memory, student? You can utilize this memory with the concept of circular queue. If both point, both point last and first को मिला दीजिए, then after this rear is increase and rear increase come to this position and you can utilize this memory, right? So this is the concept of circular queue, बच्चे. Okay. So in circular queue, both point, अगर हम बच्चे both point को मिला दें तो कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा. You feel like this is circular queue? Okay. So in circular queue में, if front is what, sir? Front is front and rear both is pointing to this position. क्या किया मैंने? ये गलत कर दिया.
बच्चे इसको करेक्ट कर लीजिए। ओके, if front is set to this one and rear is set to this one, in circular queue, in yes, inefficient use of memory in circular queue, can I increase this rear value? Yes sir, बिल्कुल कर सकते हैं। You can increase this rear. Sir rear किस तरह से increase होगा? In simple linear queue, how rear is moving? बच्चे rear equals to rear plus one. In front is moving, sir front equals to front plus one. But my dear student, if rear is moving just like rear equals to rear plus one, तो after this rear equals to 7 plus 1 8 हो जाएगा. But 8 not exist, 8 index not exist. I have to set rear in 0 index. Then what should I do for this? Sir, you have to take modulus, right? Modulus operator. So in here, sir, front rear is moving, sir, rear equals to rear plus 1, sir, modulus operator, sir, size, right? Whatever size. Here size is what, sir? Let I take size here. And how front is moving? Sir, front is moving to like front equals to front plus 1 size. In circular queue, we will use this modulus sign because after modulus, if you write here, sir, r equals to 7 plus 1, 8, और size भी क्या है बच्चे इसका? 8 है. 8 modulus 8, rear is moving to this one, and you can insert element here like 90. Okay. So this is circular queue concept बच्चे. You can utilize this all memory. Okay. Now come to circular queue. So in circular queue, first of all, write here how rear is moved. So rear equals to rear plus 1 modulus size let n, and how front move, let's say front equals to front plus 1 model of n. Understood? Fine, sir. Okay, so first implementation. फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन बच्चे, पहला पहला इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस करते हैं। इनिशियली सर फ्रंट इक्वल्स टू सर -1 and rear equals to -1. I am taking initially condition front equals to -1 and rear equals to -1, and I want to implement this circular queue by this concept bache. If initially front equals to -1, rear equals to -1. Sir, this is compulsory? No, it is not compulsory. You can take any value, right? So let I first discuss front equals to -1 and rear equals to -1, student. But in this implementation, you have to take care about both, student. You have to take care about both first insertion as well as last deletion. कैसे सर? अभी मैं डिस्कस करूंगा बच्चे. In this implementation, you have to take care about both first insertion and last deletion. ओके, कैसे सर? तो चलिए पहले एनक्यू डिस्कस करते हैं बच्चे. एनक्यू ऑपरेशन. लेट आई फर्स्ट डिस्कस एनक्यू ऑपरेशन, स्टूडेंट. क्यू यू ई कितने बार घूम गया बच्चे? क्यू यू ई यू ई. ठीक है, एनक्यू ऑपरेशन. एंड आफ्टर दिस विल डिस्कस डी क्यू. घुमा लीजिए. ई क्यू डी ई यू, एक ज़्यादा बार हो गया ये. This is DK operation.
सो फर्स्ट बच्चे एन क्यू के लिए इनिशियली रियर इक्वस टू बच्चे क्या है, इनिशियली रियर इक्वस टू -1 है. If rear equals to -1, then first increase बच्चे rear equals to rear plus 1, rear equals to rear plus 1 mod size, and second, sir q rear per you can insert value. After this you can insert value. Okay, but my dear student, during first insertion, if you insert first, sir here rather than r equals to -1, it is better to use r equals to 0. भाई lucky you can take r equals to 0 also. R equals to yes, it is up to you. आपके ऊपर है. The restriction is first in first out. Understood? Initially front equals to -1, rear equals to -1. Sir, I want to insert first element. If you insert first element, then first increase rear. Student, first increase rear. So rear equals to rear plus 1. Mod n. So rear plus 1 -1 plus 1 0. 0 mod n is 0. So rear is set to बच्चे, rear is set to this position. Sir, if this is first insertion, then set front also 0. If this is first insertion, then set front equals to 0. Sir, how we can detect this is first insertion? Right? First insertion के लिए what you have to do? Sir, check front equals to -1. Sir, if front equals to सर फर्स्ट इंसर्शन कैसे पता चलेगा बच्चे? सर इफ फ्रंट इक्वल्स टू -1, if front equals to -1, this is first insertion. In this case set front equals to 0. In this case set front equals to 0. This is first insertion बच्चे. Okay, you have to take care. मैंने कहा था ना, you have to take care about first insertion, right? Okay, ये इस साइड से सही नहीं लग रहा बच्चे. Just minute. चलो फर्स्ट इंसर्शन है. सो यस फर्स्ट इंसर्शन, देन फ्रंट सेट टू ऑल्सो फ्रंट सेट टू 0 बच्चे. And after this q rear per value, you can insert value here like 10. And after this student, I want to insert one more element. So rear equals to rear plus 1. So rear increase rear plus 1 mod n. So rear equals to 1 and q rear pay. You can insert elements like 20. Sir, I want to insert one more element. Rear equal to rear plus 1 mod n. So this is 2, right? So rear is pointing to this one, and you can insert value 30. Okay. So here student, in this implementation, first increase rear, and after this q rear pay, you are inserting value. So now sir, similarly, first increase rear and here I am inserting value. So similarly student, tell me 50, 60, sir 70, 80, sir 90 and 100. So now rear is pointing to this one. Okay. Can I insert one more element student? Can I insert one more element? Yes, Lucky, just wait. Can I insert one more element? Yes. Yes, everyone reply. Can I insert one more element? No. This is overflow. So what is overflow or full condition, बच्चे? Overflow or full condition if front equals to what, sir? Rear plus 1 mod n.
This is overflow condition. Front is sir 0 and rear plus 1, sir 9 plus 1 is 10, 10 mod 10 is 0, 0 बराबर 0. Yes, this is overflow condition. You cannot insert element. Okay. What about dequeue? How we can perform dequeue, बच्चे? No, this is not good condition. Lucky, rear equals to n minus 1, not good. Sir, intermediate, some more cases, sir, if front equals to rear plus 1 mod n, then it generate overflow. कैसे sir? अभी will discuss this, but wait. Okay. यस, इधर देखिए बच्चे, लकी इधर देखो। सर मुझे डिलीट कुछ करना है बच्चे, मुझे कुछ डिलीट करना है। तो अभी पहले डी क्यू समझ लेते हैं, इसके बाद डिलीट मैं बताऊंगा आपको। डी क्यू पहले समझ लीजिए। नाउ फ्रंट इज सेट टू 0 बच्चे। तो फर्स्ट बाय इक्वल्स टू क्यू फ्रंट पर डेटा, व्हाट इज डेटा हियर। सेकेंड सर फ्रंट इंक्रीज कर दिए, फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1 mod n। थर्ड रिटर्न डिलीटेड आइटम, रिटर्न डिलीटेड आइटम बाय। सो क्यू फ्रंट पर क्या वैल्यू बच्चे, 10 है। क्यू फ्रंट पर व्हाट इज द वैल्यू हियर सर, 10। क्यू फ्रंट पर क्या वैल्यू बच्चे, 10 एंड फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1 mod n। सो फ्रंट इज सेट टू दिस वन, राइट। सो दिस एलिमेंट इज डिलीटेड, यू कैनॉट एक्सेस दिस एलिमेंट एंड रिटर्न डिलीटेड आइटम, राइट। सो फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1 से फ्रंट 1 हो गया। नाउ सर आफ्टर दिस आई वांट टू डिलीट वन मोर। सो फ्रंट इक्वल्स टू क्यू फ्रंट पर क्या डेटा आ जाएगा बच्चे, 20। सो व्हाट इज द डेटा हियर सर, 20 and front equals to front plus mod n, 1 plus 1, 2 mod 10, 2 mod 10 equals to 2. So front is set to this one, this element is deleted and return deleted item. So in this way you can delete item. Okay, you can delete item बच्चे, understood? Okay, similarly sir, can I insert one more element here student? पहले डिलीट देख लेते हैं बच्चे, पहले डिलीट देख लेते हैं। फिर इसी तरह से बच्चे हम आगे डिलीट करते जाएं, तो फ्रंट को आगे बढ़ाते जाइए सर, फ्रंट को आगे बढ़ाते जाइए, फ्रंट को आगे बढ़ाते जाइए। फ्रंट जब आगे बढ़ के यहाँ पहुँच गया तो ये सारे एलिमेंट डिलीट हो गए। यस स्टूडेंट, कैन आई डिलीट वन मोर एलिमेंट हियर, कैन आई डिलीट जस्ट लाइक इन नॉर्मल प्रोसीजर बच्चे, जस्ट लाइक नॉर्मल प्रोसीजर, क्या मैं डिलीट कर सकता हूँ? अगर आप नॉर्मल प्रोसीजर से डिलीट कर रहे हैं, जैसे आपने ये किया, इस तरह से अगर आप डिलीट कर रहे हैं तो क्या दिक्कत होगी, क्या दिक्कत होगी? सर अगर आप इस तरह से डिलीट कर देंगे just like this normal procedure, then front is set to what sir, front come to this one and this element is deleted, understood? अगर आप इस तरह से डिलीट कर देंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। सर कैन आई इंसर्ट वन मोर एलिमेंट, यस एवरीवन रिप्लाई। अगर आप नॉर्मल प्रोसीजर से डिलीट करेंगे, सो कैन आई इंसर्ट वन मोर एलिमेंट। आंखों से देखिए, चेक, आप आंखों से देखिए, आंखों से सर क्यों पूरा खाली दिख रहा है, लेकिन आप प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे सर, if front equals to rear plus 1 mod n, सर दिस इज ओवरफ्लो कंडीशन, दिस कंडीशन इज ट्रू हियर। फ्रंट equals to rear plus 1 mod n, सर दिस इज ओवरफ्लो, दिस शोइंग ओवरफ्लो, बट आप एक्चुअल देखिए दिस इंटायर क्यू इज एम्प्टी, यू कैन नॉट इंसर्ट एलिमेंट, राइट स्टूडेंट? इट मीन्स something is wrong. Wrong is what? Last deletion. You have to take care about last deletion. लास्ट डिलीशन के बारे में आपने गलत तरीके से कर दिया, अलग तरीके से करना चाहिए। तो लास्ट डिलीशन को हम देख लेते हैं बच्चे। और लास्ट डिलीशन, सर लास्ट डिलीशन कैसे डिटेक्ट होगा बच्चे? सर इफ फ्रंट इक्वल्स टू रियर
If both is pointing to same location, front equals to rear, this is last deletion. In this case, set front equals to -1, rear equals to -1, student. You have to take care about, sir, last deletion also. In this case, set front equals to -1, rear equals to -1 बच्चे. You have to take care about last deletion also. राइट तो आप इस पे सेट कर देंगे उसे. ठीक है, किस पे सेट कर देंगे बच्चे? सर इस सिनेरियो में इस पे सेट कर देंगे. तो यू हैव टू टेक केयर अबाउट बोथ स्टूडेंट, राइट. बोथ फ्रंट एंड रियर बोथ सेट टू व्हाट सर? बोथ सेट टू इनिशियल कंडीशन, दिस वन. सर व्हाट इज द अंडरफ्लो कंडीशन बच्चे? व्हाट इज अंडरफ्लो कंडीशन? Yes, everyone reply. So this is the underflow condition. Either you can check front equals to -1 or rear equals to -1. So if front equals to -1 or if rear equals to -1, so this is underflow. You can check any one or both, because both at a time दोनों ही क्या हैं बच्चे? So this is an underflow condition. All right. Now come to this one. Sir, why this condition is true? Overflow condition बच्चे. My dear student, sir, I want to insert one more element. Can I insert one more element, student? Check this condition. During insertion, you have to check overflow condition. If front equals to rear plus 1 mod n है क्या? क्या ये कंडीशन ट्रू है बच्चे? ओवरफ्लो के समय फ्रंट इक्वल्स टू रियर प्लस 1 mod n नहीं है ट्रू. तो क्या करें सर? क्या करें फिर? सर फर्स्ट इंक्रीज रियर इक्वल्स टू रियर प्लस 1 mod n. सो रियर इक्वल्स टू दिस वन, rear equals to rear plus 1, and you can insert element here 10. So yes sir, perfectly insert कर सकते हैं. अभी सर overflow नहीं था क्या? Can I insert one more element here? Yes sir, definitely you can insert element. कैसे सर? How we can कैसे करेंगे सर? सर पहले देखो ये कंडीशन क्या ओवरफ्लो है? फ्रंट इक्वल्स टू रियर प्लस 1 mod n नहीं है सर, नहीं है, कंडीशन फॉल्स है. तो आप रियर को इंक्रीज करिए, रियर इक्वल्स टू रियर प्लस 1 mod n. सो रियर इज पॉइंटिंग टू दिस वन एंड यू कैन इंसर्ट एलिमेंट हियर. सो दिस इज ओवरफ्लो कंडीशन, राइट? लकी, अंडरस्टूड? You cannot write कि rear equals to n minus 1. This is overflow condition. The overflow condition is this. Okay. This condition सर कहीं भी बन सकती है, राइट? एनीवेयर कहीं भी ये कंडीशन बन सकती है. फ्रंट इक्वल्स टू रियर प्लस 1 mod n. दिस इज एक्चुअल ओवरफ्लो. ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट? total number of element. Sir, total number of element. Total elements in the queue. So total element in the queue, first case, बच्चे, case number 1. First case. Sir, if rear is greater than equals to front, case 1. If rear is greater than equals to front, बच्चे, how many total number of element in this queue, student? If rear is greater than equals to front, then number of element equals to कितने होंगे बच्चे? बोलो भाई. एक काम करते हैं, इसकी कॉपी बना लेते हैं, जगह कम पड़ेगी.
जगह कम पड़ रही है बच्चे, इसकी कॉपी बना के यहाँ सॉल्व करते हैं। ये कब है बच्चे? इफ इनिशियली फ्रंट इक्वस टू क्या है, -1, एंड रियर इक्वस टू क्या है, -1। उस केस में बता रहा हूँ बच्चे, पहला केस, केस नंबर 1, केस 1, केस 1, if rear is greater than equals to front, if rear is greater than equals to front, then number of element in this queue, सिंपल वही फॉर्मूला बच्चे, रियर माइनस फ्रंट प्लस 1। बट रियर इज ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रंट के केस में दिस फॉर्मूला वर्क फॉर एवरीवेयर एक्सेप्ट फॉर इनिशियल केस, एक्सेप्ट फॉर इनिशियल केस, इनिशियल केस सर फ्रंट इक्वल्स टू -1 एंड रियर इक्वल्स टू -1। इस केस को छोड़कर ये सभी जगह वर्क करेगा बच्चे, अंडरस्टूड? आप चाहें तो ट्राई कर लीजिए सर, इस फॉर्मूला ये एवरीवेयर वर्क करेगा केवल इस इनिशियल को छोड़कर। केस नंबर 2, आप चेक कर सकते हैं बच्चे कितने एलिमेंट हैं, रियर इज 9, रियर इज 9, 9 माइनस 2 इज व्हाट सर, 7, 7 प्लस 1 इज 8। हाउ मेनी एलिमेंट इन दिस क्यूब बच्चे, हाउ मेनी एलिमेंट सर, 1 सर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, परफेक्ट सर। केस 2, इफ फ्रंट ग्रेटर देन रियर, केस 2 बच्चे, इफ फ्रंट ग्रेटर देन रियर, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस क्यूब बच्चे, बोलो भाई। बोलो सर, फ्रंट ग्रेटर देन रियर के केस में सबसे पहले निकालो हाउ मेनी एम्प्टी सेल्स, हाउ मेनी एम्प्टी सेल्स बच्चे, ये एम्प्टी सेल्स कितनी हैं, कितनी एम्प्टी सेल्स हैं बच्चे, हाउ मेनी एम्प्टी सेल्स बताइए। नहीं नहीं, पहले ये निकालो कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं बच्चे इसमें, क्या निकालो बताओ कैसे निकले। नहीं, इस पे तो केस लग ही नहीं रहा है वो, इस पे तो ये केस लगेगा ही नहीं बच्चे, उसके लिए हमें अलग से बनाना पड़ेगा सर सेकंड केस, वो यहाँ लगेगा, यहाँ देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बच्चे उसी में बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? तो सारा एक साथ आपको दिखाई देगा। यस, यस सर, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक काम करते हैं, इसी की कॉपी क्रिएट करता हूँ। ये फ्रंट ग्रेटर देन रियर, बोलो भाई फ्रंट ग्रेटर देन रियर में कितने एलिमेंट्स होंगे?
सर इस क्यू को मैं दोबारा बना देता हूँ, इधर देखो बच्चे, फ्रंट ग्रेटर देन रियर कब होगा सर? फ्रंट से ये था 10, 20, 30, सर 40, 50, 60, 70, अब आपने फ्रंट से डिलीट कर दिया बच्चे, फ्रंट को आगे बढ़ा दिया, रियर इसको पॉइंट कर रहा है, फ्रंट से ये आगे बढ़ा दिया, फ्रंट इस पे आ गया, सर फ्रंट इस पे सेट कर दिया तो ये भी डिलीट हो गया। इस तरह से लेट सपोज कि फ्रंट बच्चे इस पे सेट हो गया, मान लेते हैं कि फ्रंट किस पे सेट हो गया, इस 4 पर, तो ये पीछे के सारे एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे, ऑल एलिमेंट डिलीटेड, अंडरस्टूड। अब इसके बाद आप रियर को आगे बढ़ा सकते हैं, समझे? रियर को आप आगे बढ़ा सकते हैं, रियर इक्वल टू रियर प्लस वन, सो रियर से यहाँ आ गए, रियर इक्वल टू रियर प्लस वन से क्या हो गया बच्चे? सर आपने 10 इंसर्ट कर दिया, राइट, ओके फाइन। नाउ आपने फिर फ्रंट से डिलीशन कर दिया, फ्रंट से डिलीशन करके फ्रंट को आप कहाँ ले गए सर? फ्रंट को आप सपोज डिलीट करके यहाँ पे आ गए, सो यहाँ आ सकते हैं, तो ये एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे बच्चे, ओके। नाउ रियर को फिर आपको मन हुआ सर रियर और बढ़ा लेते हैं, यस रियर बढ़ा लीजिए, अंडरस्टूड बच्चे। तो इस तरह से ये वाला सिनेरियो देखिएगा सर, इफ फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस क्यू, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस क्यू स्टूडेंट? बोलो भाई, सभी लोग कहाँ खो गए? लकी बच्चे, बहुत कॉन्सेप्चुअल बात बता रहा हूँ, आ जाइए आगे, और भी बहुत कॉन्सेप्चुअल बातें हैं क्यू में। सो टाइम 11:16 हो गया है, ओहो, वन सेकंड। सो टोटल एलिमेंट के लिए बच्चे ये एम्प्टी सेल्स को पहले निकालो, हाउ मेनी एम्प्टी सेल्स? सर फ्रंट माइनस एम्प्टी सेल्स अगर मैं निकालूं सर, फ्रंट माइनस सर रियर, सर फ्रंट कितना है बच्चे? 6 माइनस रियर 5, बट एम्प्टी सेल्स तो 4 ही हैं, -1, तो ये इतनी एम्प्टी सेल्स हैं। इसको टोटल में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं ये, तो ये आपको निकल आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट बच्चे। नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू व्हाट सर? n प्लस सर f प्लस r प्लस, नहीं नहीं, ये गलत हो गया, इसे करेक्ट करिए, इस माइनस को अंदर ले जाइए, n-f प्लस r प्लस 1, ये हो जाएगा बच्चे, ओके। केस 3 में बताइए कितना होगा? केस 3 मैं कहता हूँ इफ फ्रंट इक्वल्स टू -1, तो ये तो इनिशियल केस है मेरे भाई, फ्रंट इक्वल्स टू -1 और रियर इक्वल्स टू -1, यू कैन चेक एनीवन। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इसमें सर? 0। सो ये बच्चे ये सारे इसके केसेस आ गए, बट इस कोड में क्या दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है सर, यू हैव टू टेक केयर अबाउट बोथ फर्स्ट इंसर्शन एज लास्ट डिलीशन, राइट? इसमें सर यू हैव टू टेक केयर अबाउट, क्या मैं इसको, ये जो इसमें हमारा टाइम किल हो रहा है बच्चे इस कोड में, ये जो मैं लिख रहा हूँ सर, फर्स्ट इंसर्शन और लास्ट डिलीशन, हाँ सर, जब इंसर्ट करते हैं तो फ्रंट को 0 पे सेट करते हैं, लास्ट डिलीशन हो तो फ्रंट इक्वल्स टू -1, रियर इक्वल्स टू -1, सो दिस इज द प्रॉब्लम, हाउ वी कैन रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम? सो नाउ लेट डिस्कस अनदर इम्प्लीमेंटेशन बच्चे। क्या डिलीट कर दिया मैंने? नाउ चेक अनदर इम्प्लीमेंटेशन सर्कुलर क्यू का, सर इनिशियली सेकेंड इम्प्लीमेंटेशन बच्चे,
initially front equals to 0 and rear equals to 0. Yes, लकी देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बच्चे. Sir, if front equals to 0 and rear equals to 0, in this implementation, sir, no need to take care about first insertion because front is already set to 0, right? As well as you will see no need to take care about last deletion also. So, how, sir, कैसे? We'll discuss, student, अभी we'll discuss shortly. So, no need to take care about first insertion and, sir, last deletion. हाउ सर कैसे? अभी बच्चे अभी जस्ट मिनट, अभी आपको पता चलने वाला है कैसे. सो इनिशियली बच्चे इसमें फ्रंट इक्वल्स टू क्या है? इनिशियली फ्रंट इक्वल्स टू और रियर इक्वल्स टू दोनों किस पे सेट हैं? 0 पे. ओके, दिस एंटायर क्यू इज एम्प्टी. सो क्यू एम्प्टी और ओवरफ्लो कंडीशन. व्हाट इज क्यू एम्प्टी और ओवरफ्लो, सर, अंडरफ्लो कंडीशन? क्यू एम्प्टी और अंडरफ्लो कंडीशन बच्चे. What is Q empty or underflow condition? Yes, everyone reply answer. Q empty or underflow condition if front equals to sir rear. If front equals to rear बच्चे. If front equals to rear. If this condition is true, then this if this condition is true, then this is empty Q or underflow condition, right? Whenever this condition satisfied, either front equals to 1, rear equals to 1, yeah, front equals to 3, rear equals to 3, front equals to 6, rear equals to 6, front equals to 8, rear equals to 8, this entire Q will empty, student. You can check. Wait, right, student? So this is a Q empty or underflow condition, right? So being a circular Q, bache, the rear is moving to rear equals to rear plus 1, mod n. And similarly, front is moving to, sir, front equals to front plus 1, sir, mod n. Okay. So now let first discuss enqueue operation. Sir, initially rear is what, sir? Sir, 0. So enqueue के लिए first what you have to do? In this implementation, can I write rear equals to rear plus 1? First, can I increase rear? If you increase rear, then ये लोकेशन आपकी छूट जाएगी बच्चे, ये लोकेशन छूट जाएगी, राइट? तो फर्स्ट इंसर्ट क्यू रियर पर फर्स्ट इंसर्ट वैल्यू एंड सेकेंड, सर, इंक्रीमेंट रियर इक्वल्स टू रियर प्लस 1. सो क्यू रियर पे फर्स्ट इंसर्ट वैल्यू, सर, फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, सर, क्यू रियर पे वैल्यू, लेट आई इंसर्ट वैल्यू हियर 10 and q rear equals to rear plus 1, so rear equals to 1. So rear is pointing to this one, right? So this is the scene. Understood? Now I want to insert one more element. Then what you have to do is, student, in this implementation, first you have to insert value. Earlier, what will happen, sir? In the previous scenario, in the previous cases, first increase rear, then insert value. Earlier, what we have done, sir, first increase rear, then insert value. But in this implementation, first insert value, then increase rear. Now I want to insert one more element, student. So first insert value 20 and rear is pointing to this one. Very simple, sir. Very simple. So tell me, student, I want to insert similarly 30, 40, sir, 50, 60, 70, sir, 80 and 90. Then where is rear, student? Where is rear? Rear is pointing to 8 or rear is pointing to 9? Sir, in this implementation, now rear is pointing to 8 or rear is pointing to 9? Bolo bhai. Yes, Uddhav. Everyone reply. Because first insert, then increase rear. So rear is pointing to 9, student. Okay. Can I insert one more element, student? Can I insert one more element? उद्धव, रियर उसके पहले इंक्रीज करके फिर रियर, पहले इंसर्ट करके फिर इंक्रीज हो रहा है.
पहले वैल्यू इंसर्ट हो रही है देन इंक्रीज रियर, सो रियर 9 को पॉइंट करेगा बच्चे। ओके, कैन आई इंसर्ट वन मोर एलिमेंट? yes student, everyone reply, can I insert one more element? can I insert one more element बच्चे? no. what about Sidhu and lucky? lucky saying no. we can, उद्धव कह रहे हैं सर, सिद्धू ने कहा नो। बच्चे अगर मैं यहाँ इंसर्ट कर देता तो क्या होता? अगर आप इंसर्ट कर दोगे बच्चे तो रियर पहले इंसर्ट करेगा वैल्यू, लेट सपोज मैंने इंसर्ट कर दिया 100, तो रियर किस पे फिर उसके बाद आ जाएगा? फिर इस पर आ जाएगा, रियर इस पे आ जाएगा बच्चे, 0 पे, राइट। अगर आपने इंसर्ट कर दिया तो ये सीन हो जाएगा बच्चे। मान लो जबरदस्ती मैंने कर दिया, सुनिए बात को, अगर इंसर्ट कर दिया तो ये हो जाएगा, राइट। अब मुझे इस क्यू से कुछ डिलीट करना है, आई वॉन्ट टू डिलीट सम एलिमेंट फ्रॉम दिस क्यू, सो कैन आई डिलीट स्टूडेंट? लेट सपोज हमने कर दिया उसको, तो अब मैं इससे डिलीट करना चाह रहा हूं। आप अपनी आंखों से देखिए पूरा क्यू भरा हुआ है, लेकिन कंडीशन कौन सी सेटिस्फाइड हो रही है? लुक हियर, यहां देखो भाई, क्या कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है? सर फ्रंट इक्वल्स टू रियर, ये क्या कहेगा? सर क्यू इज एम्प्टी, रिटर्न बैक आई कैनॉट डिलीट बिकॉज फ्रंट इक्वल्स टू रियर, बट हियर सर एक्चुअल सिनेरियो दिस क्यू इंटायर क्यू इज फुल, स्टिल यू कैनॉट डिलीट, दिस इज शोइंग underflow condition, so this is wrong, you cannot insert element, you cannot insert element, so go back student at previous state, go back at previous state बच्चे, you cannot insert element, so then sir what about this cell, what about this memory cell? This is showing overflow, so this is overflow, so overflow condition is what? यहां लिखते हैं बच्चे ओवरफ्लो, overflow or full condition if front equals to rear plus 1 mod n, so this is overflow condition बच्चे, ओवरफ्लो वही है बच्चे, so you cannot insert element here, it is showing what sir? Overflow. So in this implementation you can utilize n minus 1 memory cell out of n cell, you cannot completely utilize all memory cell, this is the problem in this here, right student? So in this implementation you can utilize n minus 1 memory cell out of n cells. कुछ नहीं है, कोई समझ लीजिए बच्चे, याद नहीं रखना है, अगर आप समझ गए ना तो सारी चीज़ों को समझिए। क्यू ऐसा नहीं है कि आप सिंपल पढ़ के आगे निकल गए, क्यू में बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं, कैसा भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, अगर आप ये सारी कंडीशन उसके बाद सारे क्वेश्चन आप बना लेंगे। ओके, सो यू कैन यूटिलाइज n माइनस 1 मेमोरी सेल आउट ऑफ n सेल, सो ये इसका ड्रॉबैक है बच्चे, ये प्रॉब्लम है इसमें। ओके ये वाली चीज़ कहीं भी बन सकती है बच्चे, ये जरूरी नहीं कि इसी केस में बनेगा। मान लो चलिए अब हम डिलीशन देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट अब हम डिलीशन देख रहे हैं, डी क्यू पहले देखते हैं। डी क्यू के लिए फर्स्ट सर बाई इक्वस टू क्यू फ्रंट पे क्या वैल्यू है असाइन कर लीजिए, लेट हियर 10, क्या वैल्यू है बच्चे? 10।
सेकेंड, फ्रंट को आगे बढ़ा दीजिए सर, फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1 सर मॉड ऑफ साइज n, तो फ्रंट कहाँ बढ़ जाएगा बच्चे, फ्रंट इस पे आ जाएगा, राइट, दिस एलिमेंट डिलीटेड, रिटर्न डिलीटेड आइटम, इसको डिलीट कर दीजिए। तो इस तरह से बच्चे आप इसको डिलीट कर दीजिए। ओके, नाउ मुझे एक और एलिमेंट डिलीट करना है सर, कर लीजिए सर, इसी तरह से फ्रंट में आगे बढ़िए सर, फ्रंट इस पे आ गया, ये एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड बच्चे। सर और डिलीट करना है तो और डिलीट कर लीजिए मेरे भाई। चलो अब मुझे इंसर्शन करना है, क्या मैं इंसर्शन कर सकता हूँ बच्चे? क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है? ओवरफ्लो, ओवरफ्लो ये कहाँ गई ओवरफ्लो, ये रही है। फ्रंट इक्वल टू रियर प्लस 1 मॉडर्न नहीं हो रही है, तो क्या होगा बच्चे, पहले रियर इंक्रीज होगा, पहले इंसर्ट होगा वैल्यू सर 100, उसके बाद रियर इसको पॉइंट करने लगेगा। ओके, नाउ यू कैन इंसर्ट एलिमेंट। नाउ मुझे और एलिमेंट इंसर्ट करना है बच्चे, सो क्या होगा, पहले एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा, उसके बाद रियर यहाँ आ जाएगा। नाउ कैन आई इंसर्ट वन मोर एलिमेंट? नो, यू कैन नॉट इंसर्ट वन मोर एलिमेंट, वन मेमोरी सेल इज वेस्टेड स्टूडेंट, नाउ यू कैन नॉट इंसर्ट एलिमेंट। सो एनीवेयर सर, इसमें कहीं भी ये वाली कंडीशन अगर बन जाती है, ओवरफ्लो कंडीशन शो करेगा, एक मेमोरी सेल आपकी वेस्ट होना ही होना है, ये आप एक मेमोरी सेल वेस्ट हो जाएगी। ओके, चलिए, मुझे सर और डिलीट करना है, आप डिलीट कर लीजिए। कैसे डिलीट होगा सर? फ्रंट को आगे बढ़ा दीजिए, फ्रंट इस पे आ गया, ये डिलीट हो गया, सर फ्रंट इस पे आ गया सर, ये डिलीट हो गया। ओके, तो इस तरह से फ्रंट से आप डिलीशन कर सकते हैं। ओके बच्चे, फाइन। तो ये बच्चे क्या है, ओके, फ्रंट से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब फ्रंट से डिलीट करते करते, हम फ्रंट से डिलीट करते करते बच्चे यहाँ आ गए, फ्रंट से डिलीट करते करते यहाँ आ गए, देखो भाई, this is the last element, can I delete this last as a normal procedure student? क्या you have to take care about special, कुछ केयर इसके लिए करना पड़ेगा क्या, स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा इसके लिए? नहीं सर, नॉर्मल जैसे डिलीट हो रहा था सर, फ्रंट को इस पे सेट कर दीजिए सर, ये एलिमेंट भी डिलीट हो जाएगा, ये एलिमेंट भी इसी तरह से डिलीट हो जाएगा सर। अब सर ये एलिमेंट डिलीट हो गया, तो देखिए क्या कंडीशन बनी सर, या क्या ये कंडीशन बन रही है, क्या ये कंडीशन बन रही है सर? फ्रंट इक्वल्स टू रियर, यस सर, फ्रंट इक्वल्स टू, नो नीड टू टेक केयर अबाउट लास्ट डिलीशन, नो नीड टू सेट फ्रंट इक्वल्स टू -1, फ्रंट इक्वल्स टू 0 एंड रियर इक्वल्स टू 0, कोई जरूरत नहीं है बच्चे। आप क्या हो रहा है, फ्रंट इक्वल्स टू 1, रियर इक्वल्स, इंटायर क्यू इज एम्प्टी, नाउ आई वांट टू इंसर्ट एलिमेंट, आप इंसर्ट कर सकते हैं बच्चे, राइट, कहीं भी एनीवेयर। सो this code is a little bit faster as compared to previous code. If I talk about time complexity, this code is a little bit faster as compared to previous code. In previous code, you have to write every time when you insert element, every time check if it is first insertion, every time it check if it is first insertion, that's front equals to -1, right? And when deletion के time, every time you have to check this is last deletion, right? अगर last deletion है front equals to rear, then आपको front को 0 पे -1 पे सेट करना है, rear को -1 पे सेट करना है। But this code में no need to write any code for first insertion and last deletion, right? So this is faster as compared to previous code, but the problem in this code is you can utilize n-1 memory cells out of n cells. एक memory cell इसमें बर्बाद हो जाएगा, जाने दो भाई, जाने दो, time is more important than space, understood? So ये है बच्चे इसकी कहानी। नाउ टोटल एलिमेंट, इफ आई टॉक अबाउट टोटल एलिमेंट बच्चे, तो टोटल एलिमेंट की अगर मैं बात करूं इसमें, तो अभी बच्चे फ्रंट इसको पॉइंट कर रहा होगा, इसको इस सिनेरियो में, और रियर इसको पॉइंट कर रहा होगा, होगा या नहीं बताओ? ये कोई इंटरमीडिएट सिचुएशन इस तरह की बनी कि आपने इंसर्ट किया फिर फ्रंट से डिलीट कर लिया, तो रियर में लास्ट है तो रियर आगे वाली वैल्यू पॉइंट करता है, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस इंप्लीमेंटेशन, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस क्यू,
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस इम्प्लीमेंटेशन बच्चे, बताइए भाई। बच्चे you can use this as a formula, rear minus front plus n or modulus n. Okay. You can use this as a formula, sir, rear minus front plus n modulus n. Understood, student? No need to check rear greater than front, front greater than rear, rear equals to this one. Everywhere this formula is satisfied, student. Rear minus front plus n upon n. आप कहीं भी लगा सकते हैं बच्चे, इस एग्जाम्पल में भी लगा सकते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या वैल्यू दी गई है सर? फ्रंट कितना है बच्चे? इस एग्जाम्पल में रियर कितना है बच्चे? रियर इज 9 एंड फ्रंट कितना है बच्चे? व्हाट इज फ्रंट? फ्रंट इज 2 and total n, sir, size of this is 0 to 9 is 10. So how many number of element right here? Sir, 9 minus sir 2 plus 10 modulus 10 कितना आ रहा है बच्चे? देखो जरा, 9 माइनस 2 कितना हुआ? 7, 7 प्लस 10 कितना हुआ? 17, 17 मॉडल 10, क्या रिजल्ट आएगा? 7। क्या 7 एलिमेंट हैं? देखो जरा, या गलती हुई कहीं? ये सर 7 एलिमेंट हैं, 1 सर 2 3 4 5 6 7। हाउ मेनी एलिमेंट? 7 एलिमेंट। यस सर। ओके, अंडरस्टूड बच्चे? नाउ this is the summary of all cases. If initial front equals to rear equals to 0 बच्चे, if initially front equals to rear equals to 0, मतलब लास्ट वाला जो केस हमने अभी डिस्कस किया, ये जो केस डिस्कस किया ना इनिशियली, ये वाला केस फ्रंट इक्वल्स टू 0 rear, this is the formula, this is the formula student. So number of element in the queue, sir, get count. If initially front equals to 0 rear equals to 0, how many number of element in this queue student? This is the number of element in this queue, this is the formula, right? Note, if initially front equals to and rear equals to -1, then number of element student, कितने एलिमेंट हैं बच्चे? if front equals to -1 है, then कितने एलिमेंट होंगे? बोलो भाई। if front equals to -1, then इतने एलिमेंट हैं, कितने हैं बच्चे? सर 0। ये फॉर्मूला जो पिछला वाला फॉर्मूला है बच्चे, रियर ग्रेटर देन इक्वल्स टू फ्रंट, रियर ग्रेटर देन इक्वल्स टू फ्रंट, देन कितने हैं? बट एक्सेप्ट फॉर इनिशियल केस, ओके, रियर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू फ्रंट, यहाँ इक्वल्स टू लगाए ना बच्चे, रियर ग्रेटर देन इक्वल्स टू फ्रंट, इसमें एक्सेप्ट फॉर इनिशियल केस, बाकी के केस में सब जगह रियर माइनस फ्रंट प्लस 1, इसमें चाहे तो लिख लें आप, दिस इज एक्सेप्ट फॉर इनिशियल केस। एक्सेप्ट फॉर इनिशियल केस को छोड़ दो बच्चे, बाकी की जगह पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है सभी जगह। एंड लेस्ट केस सर, इफ फ्रंट ग्रेटर देन रियर, देन दिस फॉर्मूला साइज माइनस फ्रंट प्लस रियर प्लस 1। ओके बच्चे, इसकी फोटो ले लो आप, आगे क्वेश्चन आपको करने होंगे, टेक स्क्रीनशॉट और फोटोग्राफ। एक्सेप्ट इनिशियल केस, कौन सा इनिशियल केस सर? फ्रंट इक्वल्स टू -1 एंड रियर इक्वल्स टू -1, इसको छोड़कर बच्चे। फ्रंट ग्रेटर देन रियर, ये रहा ना फ्रंट ग्रेटर देन रियर वाला, n माइनस फ्रंट प्लस रियर प्लस 1, यही तो था लकी, यही तो था ये वाला। देखो ये है, ये देखो फ्रंट ग्रेटर देन रियर वाला, यही रहा ना फॉर्मूला सर, n माइनस फ्रंट प्लस r प्लस 1, सर फ्रंट ग्रेटर देन रियर वाला केस, ये फ्रंट इक्वल्स टू -1 रियर इक्वल्स टू -1, ठीक है।
अंडरस्टूड, फोटो ले लिया, चलो आगे क्वेश्चन सॉल्व करो। बताओ, ए सर्कुलर क्यू हैज कैपेसिटी 12 if front equals to n, rear equals to 3, if front equals to n, rear equals to 3, empty when front equals to rear, यानी कि कौन सा केस है सर? सेकंड वाला केस है। हाउ मेनी एलिमेंट आर इन द क्यू, कितने एलिमेंट हैं क्यू में बच्चे, बताओ। किसकी बात कर रहे हो बच्चे? इसके लिए तो ये फॉर्मूला है ना सर, ये रहा रियर, ये रहा बच्चे रियर माइनस फ्रंट प्लस एन अपॉन मॉडल साइज, ये रहा उसके लिए, उस केस के लिए। तो सेकंड वाला केस है बच्चे, सेकंड में क्या फॉर्मूला लगेगा सर? इसमें एन कितना दिया गया है बताओ? टोटल एलिमेंट 12 है, एंड फ्रंट कितना दिया गया है बच्चे सर? 9 दिया गया है। रियर कितना दिया गया है? 3। हाउ मेनी एलिमेंट ऑन दिस क्यू? सेकंड इम्प्लीमेंटेशन फॉर्मूला इज रियर माइनस फ्रंट। So this is the formula, you can apply value, सब्स्टिट्यूट करिए वैल्यू बच्चे। 3 माइनस सर 9 प्लस सर 12 मॉडुलस 12, क्या वैल्यू आएगा सर? ये -6 हुआ, ये 6 मॉडुलस 12, सो इट विल बी व्हाट? 6 एलिमेंट। ओके, 7 कैसे आया उद्धव? 7 कैसे आया बच्चे? रखो इसमें सर, आर कितना है? 9 माइनस 3, सॉरी आर कितना है? 3 है, एन -1, 3 माइनस 9 प्लस 1, तो ये -6 हो गया, -6 प्लस 12 6, मॉडुलस 10 6 आएगा। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन बच्चे। कंसिडर ए सर्कुलर array based implementation of the queue where the front and rear has is been initialized to -1, array size is n, which of the following statement is true for the number of element or the size of queue? This is the formula sir. If which of the following statement true for the number of element or size of the queue? Sir, if front greater than rear, then size equals to n minus front plus rear plus 1. Second, sir, if front less than equals to rear or rear greater than equals to front, then size equals to rear minus front plus 1. Which one is true, student? अच्छा, फॉर्मूला स्लाइड ये रही। क्या करेक्ट होगा बच्चे? कौन सा ट्रू होगा बच्चे? फॉर्मूला स्लाइड देखो अच्छे से, आप भूल रहे हैं, एक बार फॉर्मूला स्लाइड देखो, इसको फोटो लो, इसका फोटो लो, फिर उससे मैच करो। फोटो लो बच्चे इसका, फिर मैच करना उसे। जस्ट टेक फोटोग्राफ एंड मैच। ओके, विच एन इज ट्रू? सर फ्रंट ग्रेटर देन रियर, कौन सा इंप्लीमेंटेशन है सर? फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला इंप्लीमेंटेशन है। तो पहले वाले इंप्लीमेंटेशन में इफ फ्रंट ग्रेटर देन रियर देन कितना होता है बच्चे? आप देखो इधर, इफ फ्रंट ग्रेटर देन रियर, ये रहा बच्चे, साइज माइनस फ्रंट प्लस रियर प्लस 1। तो ये तो करेक्ट लग रहा है मुझे सर। सर ये तो करेक्ट है सर। सेकंड वाला, इफ रियर ग्रेटर देन इक्वल्स टू फ्रंट और फ्रंट लेस देन इक्वल्स टू रियर, रियर ग्रेटर देन इक्वल्स टू फ्रंट, देन आंसर इज काउंट इक्वल्स टू रियर माइनस फ्रंट प्लस 1। तो ये भी करेक्ट लग रहा होगा आपको, राइट सिद्धू? ये बच्चे करेक्ट तो है फॉर्मूला, बट इसमें ये स्टेटमेंट नहीं लिखा है एक्सेप्ट फॉर इनिशियल केस। ये फॉर्मूला इनिशियल केस पे गलत रिजल्ट देगा। मैंने ये देखो लिया है ना हमेशा,
एक्सेप्ट फॉर इनिशियल केस, उसको छोड़कर बच्चे, इसमें क्या ऐसी गाइडलाइन कुछ है? नहीं है गाइडलाइन सर, एक्सेप्ट फॉर इनिशियल केस। मान लो इनिशियली बच्चे, इनिशियली क्या होता है बच्चे, फ्रंट इक्वल्स टू -1 एंड रियर इक्वल्स टू -1। इफ यू सब्स्टिट्यूट इन दिस फॉर्मूला, इफ यू सब्स्टिट्यूट हियर, देन व्हाट इट विल प्रोड्यूस? सर ये क्या देगा सर? -1 -1 +1 एंड +1। सर ये 1 दे देगा, जबकि इनिशियली क्यू मस्ट बी एम्प्टी। इनिशियली इनिशियली कितना आना चाहिए सर? 0 एलिमेंट आना चाहिए। इससे कितना आ रहा है? रॉन्ग आ रहा है, विच इज रॉन्ग, राइट? दिस इज रॉन्ग। सो दिस इज फॉल्स स्टूडेंट, सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि इसमें ये मेंशन नहीं है, सो इसलिए ये फॉल्स है। सो ओनली S1 इज ट्रू बट S2 इज फॉल्स। लकी क्लियर हुआ बच्चे? S1 ट्रू है और S2 फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? बिकॉज S2 में गाइडलाइन ये नहीं दी गई है कि इनिशियल केस को छोड़कर ये बाकी सब जगह ठीक है, तो मैंने तो इनिशियली लगा दिया, तो इस पे फॉल्स रिजल्ट दे रहा है ये। ओके, सो S1 इज ट्रू एंड S2 इज फॉल्स। इसका आंसर बताएं बच्चे, 10 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। 10 सेकंड, विद इन 10 सेकंड यू हैव टू आंसर। यस, क्या आंसर होगा? दिस इज सेइंग सपोज a circular queue capacity n-1 element, right, is implemented with an array of n element। ये किसकी बात हो रही है बच्चे? ये सेकेंड इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, राइट? तो ओवरफ्लो की कंडीशन क्या थी सर? वही थी ना, फुल फ्रंट इक्वल टू रियर +1, और एम्प्टी कब हो रहा था? रियर इक्वल टू फ्रंट पर एम्प्टी हो रहा था, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो बच्चे इसका आंसर करें। How to implement a queue as on singly linked list? We When we enqueue an element, where does it go? When we dequeue an element, where does it come from? Here SLL is a singly linked list. Yes, Melodious Sufia, what is the right answer for this question? Sidhu, what is the right answer for this question? यस, वेरी गुड। बच्चे क्लास अगर अच्छी लग रही है आप लोगों को, तो इसको लिंक्डइन पर पोस्ट करिए। मेरी जो भी क्लास आपको अच्छी लगी है, वॉट एवर जो भी क्लास आपको अच्छी लगी है, आप लोगों को रियली आपको लगा है कि यहाँ कुछ सीखने को मिला है कॉन्सेप्चुअली, तो लिंक्डइन पर आप पोस्ट करिए विद स्क्रीनशॉट, जस्ट लाइक जैसे उद्धव ने किया है। ओके उद्धव, आज की क्लास भी पोस्ट करिएगा। ओके, so the right answer is what sir? We have already discussed at the beginning sir, NQ at the tail। NQ कहाँ से होगा? rear point से। NQ at the tail, tail का rear कहाँ होगा सर? tail पे। and DQ at the head, DQ and head, head पे क्या होगा? front होगा। so D is the right answer बच्चे for this question। ऐसा करने से होगा क्या सर? दिस इज FIFO होगा, और NQ एंड DQ दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी सर?
constant order of 1. So this is good implementation. Be enqueue at the tail and be dequeue at the head. Now, what is the correct answer for this question, student? बच्चे दिस इज द सी का सीडो कोड है बच्चे. पाइथन में भी आ सकता है, सी में भी आ सकता है, राइट? बट सी आपको सी आता होगा इतना तो. यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है. ओके. क्यों में बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं और इसलिए इसको जरूर देखिएगा. इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चे. सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट? दिस सीडो कोड सी का दिया गया है, बट पाइथन में सी का कोड आ सकता है गेट डीए के पेपर में बच्चे. लास्ट 2 ईयर से गेट 2024 2025 दोनों एग्जाम में आया हुआ है. ओके, इसलिए मैंने सी का कोड ही दे दिया आपको. ओके. Yes, student, everyone reply answer for this question. Siddhu, Melodious, Newsbuster, where is Newsbuster? Lucky. बच्चे दिस इज द Q1 एक Q data structure है. This is a Q data structure and after running this code you have to answer four questions. Sir, what is the sum of all value in the stack ST after completion of the above operation? यहाँ पे stack ST क्या है? Stack है, right? Second question, what is the maximum stack size used? Maximum stack size MSU. Third question, what is the sum of all value of the Q2? Q2 में sum of all value क्या होगा? What is the maximum Q2 size used? Maximum Q2 size used. You have to answer 4 questions, right? After running this code, after completion of this code, you have to answer 4 questions. Okay. This type of question may be asked in GATE exam. Okay. So, my dear student, consider the following program which uses 3 data structure Q1. Yes, this is Q1 and Q2 and stack data structure ST. The program takes Q1 value as input and performs some operation. Q1 value as input and performs some operations. These are some operations. Okay. So here Q1, this is a data structure Q1 bache. ST is a stack, another data structure ST. This is stack data structure, right? And Q2 is another data structure, right? Let Q2 is another data structure. Okay. And Q1, this is Q1 given, right? So x by z function, I'm running this x by z, Q1, this Q1, integer s equals to 0,
इंटीजर s इक्वल्स टू s एक वेरिएबल है बच्चे, इंटीजर s इक्वल्स टू 0, while q is not empty, जब तक q is not empty you have to do this work. Sir, this is the while loop body बच्चे, this is the while loop body and this is if body, right? If q is not empty, yes sir, this q is not empty, then x equals to deque q1. X equals to what, student? In this case, sir, what is x? X equals to what, student? Deque q1. Sir, deque q1 is what, sir? 16. Now check if x equals to 0 hai. No sir. If let's suppose x equals to 0, then you have to do this work. But x not equals to 0, push x onto stack. Push x onto stack. So you have to push here, say 16. Okay. After this line, you again go to this condition and check is q is not empty. Yes, q is not empty. This condition is true. X equals to deque q1. Again deque. So x is what, sir? This is 13. And check is this 13 equals to 0 hai? No sir. Then push into stack. Okay. After this, again go to this. Is q is not empty? Yes, q is not empty. Now pattern is clear, bache. Now next time is what, sir? This is minus 21 deque. Sir, this is deque q1 minus 21. This is non-zero value. So आप post into stack. फिर next time loop में, sir, this is 8 value. So here this is 8. Pattern clear है. जब तक 0 नहीं मिलेगा तब तक उसके अंदर नहीं जाएगा बच्चे. ये वैल्यू 6 आ जाएगी. इसके बाद इसमें क्या आ जाएगा? इसके बाद इसमें 0 आ जाएगा बच्चे. इसके बाद इसमें 0 आ गया. Sir, if x is 0, then what you have to do? S equals to s plus pop stack. S equals to s plus pop stack. So pop from stack this 6 and add in s. S equals to s plus, so 0 plus 6 is 6. And enqueue q2 s. So enqueue, this enqueue in q2, this data is s. What is s, student? 6. And after this again s, make s is 0. And after this if and push stack in x. Sir, what is x? X is 0 here. So you can push 0 here. And again go to this loop. Sir, this is 19 and 19 not equals to 0. So directly push into stack. After this, sir, 21. So 21 non-zero, directly push 21 in stack. Now minus 11. Sir, this is minus 11, directly push in stack, student. And this is 8. This is non-zero, push into stack. 36 non-zero, push into stack. And after this is 0, student. If it is 0, x is 0, then you have to perform this operation. This condition is true. S equals to s plus pop stack. Sir, s equals to pop of stack. Pop kiya, so 36. 36 mein s equals to s plus 36. So this is 36, student. And enqueue q2 here 36. So this 36 push here and make s equals to 0 again. And after this running if push stack x. Sir, what is x? X 0 here. Okay. And again go to this while loop. Is q is not empty? Yes, q is not empty. And x equals to deque q1. So deque q1, so this is 18. So 18 is non-zero, push 18 here. And again go to while loop. Is q not empty? Yes, q is not empty. So pop from here. So this is 13. And 13 is non-zero, push into stack. Okay. And after this, again go to this while loop. Is q1 is not empty? No, sir. q1 is empty. This condition is false. You exit from this entire loop. And after this, you can answer all 4 questions, student. What is the sum of all value in stack ST after completion of the above program? बच्चे इसकी वैल्यू का सम करिए. What is the sum of all value? What is the sum of all value? सम करिए जरा, बताइए क्या आ रहा है. What is the sum of all values, बच्चे? Yes, student. What is the sum of all value? 97. This is 97. Lucky is saying 84. I think 84 is the right answer for this question. So 84 bache. Second, what is the maximum stack size used, bache? What is the maximum stack size used? Sir, 1, sir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. So MSU is what, sir? 12. What is the sum of all value of Q2? What is the sum of all value of Q2? कितना है बच्चे? What is the sum of all value of Q2 बच्चे? सर कितना है? सर this is 42, right? Okay. Now next, what is the maximum Q2 size used? Sir 1 and 2. कितना size है सर? 2. So in this way you can answer all 4 question. Sir 84, 12, 42 and 2. Okay. 84, 12, 42 and 2. This is the answer. Now in similar pattern, this is another question. Try yourself. This is homework for you. Okay. Try yourself. Same pattern question बच्चे. Now implementation of queue by using stack. Okay. So before this, sir, break for 5 minutes बच्चे. ब्रेक कितनी देर का दें बच्चे? 5 मिनट का? यस, 5 मिनट्स इनफ, बिकॉज टाइम कम है, आज फिनिश करना है बच्चे क्यू को. तो 5 मिनट्स. मीट एट सर 12:07. ओके, 12:07 पर हम लोग मिलते हैं. 12:02 हो रहा है, 12:07 PM पर मिलते हैं. ओके, दिख रहा है? काफ़ी छोटा दिख रहा है क्या? 10. उद्धव इतना टाइम नहीं है बच्चे, क्यों ख़त्म नहीं हो पाएगा. फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम इतना कर सकते हैं कि 12:10 पे मिलते हैं बच्चे. मीट सर 12:10 PM. ओके. ओके, अभी जाइएगा नहीं, 12:10 पे मिलते हैं.
ओके स्टूडेंट, कम बैक। आ गए आप लोग? ओके, वेरी गुड। So implementing a queue using stack. I want to implement a queue using stack. How many stack required, student? How many stack required, student? Two stack required. Okay. So basically, I have to implement this queue, student, without, I have to implement this queue using two stack. So minimum two stack required, student. This is S1 stack and S2 stack. Okay. So basically, what you have to do is, student, you have to implement queue by a two stack. Sir, what is the meaning of this, student? Bache, you have to implement queue. Sir, what is queue? Sir, queue is a first in first out, right? Queue is a first in first out. Sir, queue क्या होता है? Sir, queue, this is a queue. Suppose queue is first in first out. Okay, student. So you don't have this queue, bache. This queue means what? Queue is FIFO. But my dear student, you don't have this queue. You have two stack. You have two stack. This is right. This is a inside this block. There are two stack, but this is hidden, student. If you enqueue here, enqueue, then enqueue cost must be, sir, order of one. Okay. And if you perform dequeue here, in which order it perform dequeue, student? Sir, it must be first in first out. Understood? You have to implement queue by using two stack. The output of this queue is first in first out order. Output of these two stack is first in first out order. So this is the problem statement. You have two stack and you have to implement two stack. You have to implement queue by using two stack. You don't have this queue, student. ये कैसा होना चाहिए? क्यू की तरह बिहेव करना चाहिए। कैसे होगा सर? चलो इसको देखते हैं। सर, स्टैक नंबर वन, let take stack 1 S1 for enqueue, बच्चे। And stack this 2 is used for dequeue. Okay. All right. Now, sir, I want to insert element in this queue. This is a queue, student. So you insert queue, my element. It you can use this first stack S1 for enqueue. So insert this one. Sir, I want to insert one more 20. So you can insert this 20 here. Sir, I want to insert in queue 30. So you can use this S1 stack. Sir, I want to insert one more low, and then you can use this S1 stack.
Sir, I want to insert one more, then you can insert in S1 stack. So S1 stack is used for enqueue. Okay, S1 stack is used for enqueue bache. What is the time complexity for enqueue? In this manner, if you want to perform enqueue operation, the time complexity of this enqueue is what, student? Order of 1, correct, sir. Now, sir, S2 stack is used for dequeue. S2 stack is used for dequeue operation bache. Now I want to perform dequeue operation. Then S2 stack is used for dequeue. Sir, first check bache S2 stack. If this stack is not empty, then directly you can return. Right? If this stack is not empty, then directly perform pop operation. But this stack is not. This stack is empty. Then what you have to do, student? I want to perform dequeue. Sir, अगर आप queue से delete करेंगे, so dequeue. If you perform dequeue here, then what, sir? 10 deleted. If you perform dequeue here, then which element deleted bache? 10. But if you directly delete from S1 stack, then 50 deleted. But this is not first in first out. What should I do for this, student? For this bache, for this, sir, first pop here. If this entire stack is empty, pop from here and push in S2 stack. Pop here and push in this S2 stack. Pop from here and push in this stack. Pop, push in this stack. Pop and push in this stack. Now, sir, pop all element from S1 stack and push all element in S2 stack one by one. Now I want to delete this, then you can perform dequeue operation यहाँ से, right? Pop here. This is pop here. तो ये क्या होगा? सर ये आप pop perform कर रहे हैं, pop just like a delete, okay? Now I want to perform one more pop. Sir, queue is a first in first out. Sir, first in first out. So this S2 stack is not empty. You can directly delete this. I want to perform pop one more. This is not empty. You can delete. Okay. So yes, sir. This is a first in first out order. Sir, pop out sequence is what, sir? ये क्या है बच्चे? सर ये क्या है? सर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. Sir, what is this? Sir, this is what, sir, first in first out. You feel just like a queue. You feel just like a queue. First pop 10, then 20, then 30. First in first out. Yes, sir, perfect. Okay. But the worst case cost for dequeue, bache. What is the complexity for dequeue is, sir, order of n. If this entire stack is empty and this stack is full, and pop from S1 to S2 and then delete here. So worst case, this is order of n. Now my question is, sir, if n total insert operation, let n is an insert operation. N insert and m delete, and x is push operation, sir, y equals to pop operation, right? सर टोटल हमें क्यू में कितने इंसर्ट करना है? सर n. लेट इन दिस क्वेश्चन n इक्वल्स टू 5. उसमें से डिलीट कितने करने हैं? टोटल इंसर्ट सर 5 एंड डिलीट इज 3. यस, आप यू कैन चेक आउट हियर. सर m लेस देन इक्वल्स टू n. कंडीशन ट्रू है. 3 लेस देन इक्वल्स टू 5. ओके, यू हैव टू फर्स्ट n enqueue ऑपरेशन एंड m डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है. इन द स्टैक, दिस एंटायर टू स्टैक, सर x इज अ टोटल नंबर ऑफ पुश ऑपरेशन, y इज अ टोटल नंबर ऑफ पॉप ऑपरेशन. व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x एंड y? So tell me, what is the maximum value of x and what is the minimum value of this? Similarly, tell me what is the maximum value of y and what is the minimum value of this one? This is the question, student.
n इज अ टोटल नंबर ऑफ n इंसर्ट आपको करना है क्यू में, m इज अ डिलीट, m लेस देन इक्वल्स टू n, x इज पुश ऑपरेशन, टोटल पुश ऑपरेशन, y इज टोटल पॉप ऑपरेशन, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ पुश ऑपरेशन एंड व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ पॉप ऑपरेशन. यस स्टूडेंट. कितना होगा बच्चे? सो सो हियर स्टूडेंट लेट टोटल अगर हम बात करें टोटल पुश, how many push sir, total n equals to 5, total push sir first and total pop here, total pop how many pop sir, total pop कितने हुए sir, total pop n here, right? How many push operation perform here from all element pop from here to here, all element pop one by one and push in S2 stack. So total push in this second stack is also n, but total pop in second stack is what sir? Sir 3 means this m. Okay. Okay. So sir n is greater than m. So this is the maximum scenario. Total number of push operation. How many total number of push operation बच्चे? Sir n plus n. So n plus n is 2n. So this is the maximum case. Total push is 2n. And what about pop operation? And this is the maximum case of pop operation. How sir can you say this is the maximum case? We'll discuss student. This is the maximum case of pop operation. In this way, you can implement this order in first out. Okay. Let's understand second scenario, बच्चे. Let's understand second scenario, बच्चे. Sir, first insert, sir, in S1 stack used for enqueue, I have to insert total how many? Sir, कितने insert करने थे बच्चे? Sir, n equals to sir 5 and m equals to sir 3. यही था ना बच्चे? Okay. So let delete, how many delete operation we have to perform? Sir 3. So let first insert sir, first insert 3 element, m element is student in S1 stack. Okay. Now I want to perform dequeue operation first 10, 20 and 30. In which order? Sir 10, 20 and 30. Now I want to perform dequeue operation. So first push here, pop from S1 stack and push in S2 stack. Pop in S1 stack in push in S2 stack and pause here and push in this stack. Okay. Understood. After this you can delete this student. You can delete and you can delete this and you can delete this, right? So how many delete, sir? And the order of delete is first in first out ना, 10, 20, 30. यहाँ से क्या delete हो रहा है बच्चे? 10, 20, 30. So this is first in first out. Okay. यहाँ से भी क्या delete हो रहा है? Sir 10, 20, 30. Right? First in first out. Understood? Yes sir, correct. लेकिन sir I have to insert sir 5 element. Sir, so remaining 2 element you can insert after this. Okay. So remaining 2 elements is what sir? Remaining sir 40 and 50. You can insert in this stack, no problem. Yes sir, we can do. So tell me student, total push. How many total push operation? Sir, how many total push sir? कितने push हुए बच्चे? Total sir n. And how many pop operation here? Sir, only sir m, 3. M is 3. And in this stack, number of push operation, how many push operation? Sir, m, 3. And number of pop operation equals to sir m.
Okay, so total, if I talk about total push, sir, m plus n plus m, and total pop 2m. Okay, because m less than n बच्चे, m less than equals to n है, so this is the largest term, this is the smallest term. Okay, and here this is the largest, this is the smallest term, because n is greater than m. Okay, so conclusion of the story, कितना largest आया बच्चे? So n plus m is less than equals to x is less than equals to what, sir? Sir, 2n. Similarly, sir, 2m is less than equals to y is less than equals to, sir, what, sir? n plus m. So ये रिजल्ट बच्चे आ गया. This is the answer. Sir, minimum number of push operation n plus m, maximum number of 2n. Sir, minimum number of pop operation, sir, 2m, and maximum number of pop n plus m. This is answer बच्चे. Okay. Now student, this is the code, implementation of code. Right student, I want to perform enqueue operation. So कैसे enqueue हुआ देखो. So for enqueue के लिए बच्चे, enqueue के लिए use S1 stack. For enqueue के लिए what we are doing, sir, just push in S1 stack. For enqueue के लिए enqueue queue data, sir, push data in S1 stack. For dequeue के लिए first check if S2 is not empty. If S2 is not empty, my dear student, then just pop from S2 and return data. This is first in first out order, pop from S2 and return data. But else if S2 is empty, then go to else part. If S2 is empty, then transfer all element from S1 to S2, transfer all element from S1 to S2 and return pop of S2. So this is first in first out order बच्चे. अगर आप ऐसा करेंगे so ये क्या होगा, सर FIFO होगा. Here इस तरह से करेंगे तो ये क्या होगा, सर FIFO का order होगा. Right? So in this way you can implement queue by using stack, right student? So here this is important, this is important. Maybe इस पे questions आपका बन सकता है. बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताएं बच्चे. A queue is implemented using two stack S1 and S2. Initially the queue is empty. We need to perform 5 enqueue operations and 3 dequeue operations in arbitrary order. Find the minimum number of push and pop operation on the stack. Yes student, find the minimum number of push and minimum number of pop operation. Okay, so बताइएगा. Yes, कार्तिक, उद्धव, सिद्धू, सभी लोग रिप्लाई दें बच्चे. लकी, यस स्टूडेंट, क्या आंसर आ रहा है? एट पुश, 6 पॉप. तो बच्चे ये है फॉर्मूला. मिनिमम पुश इतना है, मिनिमम पॉप इतना है, राइट? तो ये इसमें जो फॉर्मूला आपका लगा, मिनिमम पुश कितना हुआ था सर? n plus m less than equals to n less than equals to 2n. ओके, दिस इज फॉर पुश. एंड मिनिमम पॉप के लिए कितना था बच्चे? 2m लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू n प्लस m. ओके, तो आपको क्या बताना था? मिनिमम दोनों बताने हैं. फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ पुश एंड मिनिमम नंबर ऑफ पॉप ऑपरेशन ऑन द स्टैक. सो मिनिमम पुश इज व्हाट?
सो मिनिमम पुश बच्चे, सो एक्स सर मिनिमम इक्वल्स टू कितना होगा सर n प्लस एम, एंड बाई मिनिमम पॉप, बाई इज द मिनिमम पॉप, ये कितना होगा सर 2m। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला। मिनिमम ये वाला टर्म है बच्चे, बाई के लिए मिनिमम क्या है 2m है। अब आपको बताना क्या है इसमें, वी नीड टू परफॉर्म 5 NQ। सर n की वैल्यू क्या गिवन है बच्चे, सर n इज व्हाट सर, सर 5 गिवन है 5 NQ ऑपरेशन एंड 3 DQ, m इक्वल्स टू कितना दिया गया है 3 DQ ऑपरेशन, आर्बिट्री फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ पुश एंड पॉप ऑपरेशन। सो इसमें वैल्यू रख दीजिए बच्चे सिंपली। सर x मिनिमम, मिनिमम पुश कितना होगा सर 8, एंड मिनिमम पॉप कितना होगा बच्चे 5, मिनिमम पॉप कितना होगा 2m यानी 6। सो दिस इज द आंसर स्टूडेंट। ओके, कम से कम आपको 8 पुश ऑपरेशन चलाने पड़ेंगे बच्चे। 86, yes Deepak Singh, 86 is the answer for this question. Okay, 8 push 6 pop, right, you are correct. Now next, implementation of a stack using queue बच्चे। Implementing a stack using queue। How many minimum queue required बच्चे, सर 2 queue required। बच्चे 2 queue required। So basically what you have to do sir, you have to implement this stack by using sir 2 queue, you have 2 queues। okay, this is let q1 and sir this queue, you this is stack बच्चे। okay, so stack कैसा होता है बच्चे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। बच्चे you don't have this stack, you have only queue। you have only these 2 queue बच्चे। if you perform here sir push operation NQ, और आउटपुट कैसा निकलना चाहिए बच्चे यहाँ से, अगर आप पॉप करेंगे, अगर आप पॉप करें तो आपको ऐसा लगे कैसा हो सर, लास्ट इन फर्स्ट आउट हो, तो देन यू कैन फील दिस इज ए क्यू। ओके सर, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग 2 queues। so now let understand the logic student। so at a time बच्चे 1 queue must be empty, at a time 1 queue must be empty student, right? And both queue simultaneously use, at a time 1 queue must be empty। I am using a costly pop operation, right? I am using the concept of sir costly pop operation। you can implement this by using 2 method, either costly pop or costly push, right? First I am taking costly pop operation concept। for NQ you can use any 1 queue, but 1 queue must be empty at a time student। so let I insert in 10 in stack, push in stack। so check Q1, if Q1 is empty, so don't disturb, if this is empty student don't disturb it, push in this NQ in Q2। sir I want to insert 20 in stack, so check Q1 is empty, then no इसको छेड़िए मत आप, 20 जो जिस क्यू में एलिमेंट उसमें इसको खाली रखना है, एक क्यू को, कोई भी एक क्यू खाली रखना है एट ए टाइम, राइट? now 30, so you can insert 30 here। now this is 40, you can insert 40 here। okay, you can 50, you can insert 50 here। so sir the cost of push operation is what sir, order of 1, and here the you feel just like a cost of आपको क्या लगेगा
कि कॉस्ट ऑफ पुश का क्या मतलब कितना आया सर, कांस्टेंट। सो कॉस्टली, बट ये कॉस्टली पॉप नहीं है, ये कॉस्टली पॉप है, कॉस्टली पुश नहीं है। तो पुश का कॉस्ट नॉर्मली है जैसे नॉर्मल स्टैक में होता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1। बट सर I want to delete element from this stack, I want to pop this stack, so stack is last in first out, so it must feel just like a last in first out order. So here now I am deleting this, or pop operation, I want to perform pop operation, student. $50, but Q is a first in first out. Q is a first in first out. If you perform dequeue operation, then 10 delete first, student. This is not first. This is not last in first out order. So what should I do for this, student? For this, all n minus 1 element dequeue from Q2 and enqueue in Q1. First, sir, all n minus 1 element just like 10 dequeue here and copy in this. Sir, 20 dequeue here and copy in this state. Sir, dequeue and copy here. Sir, dequeue and copy in all n minus 1 element, right? And how many element remaining in Q2? Sir, only one element. Now after this you can perform delete operation or dequeue perform delete. So which element deleted? Sir, 50. यहाँ पे pop क्या हुआ? Sir, 50. Okay, correct sir, correct. You feel just like a last and first out order. But पॉप इज कॉस्टली, स्टूडेंट। पॉप के लिए आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है। यहाँ पे पॉप कैसा है? कॉस्टली है। अंडरस्टूड? सिमिलरली सर, ये तो एक एलिमेंट हुआ, मुझे और भी एलिमेंट पॉप करने हैं, कैसे हों? तो बच्चे अब Q1 कैसे हो गया? Q1 इज एम्प्टी। Q1 इंटायर सॉरी Q2 नॉट Q1, करेक्ट करना बच्चे इसको। Q2 एम्प्टी हो गया। ओके, आई वॉन्ट टू परफॉर्म सर वन मोर पॉप। सो क्या पॉप होगा बच्चे? 40। सो किस ऑर्डर में हो रहा है सर? लीफो ऑर्डर में। लीफो है ना, तो अब सर मुझे पॉप करना है, लेकिन Q2 तो एम्प्टी हो गया। एट ए टाइम पे 1 क्यू मस्ट बी एम्प्टी। एट ए टाइम ये क्यू एम्प्टी होना चाहिए। यस, एम्प्टी है। तो सर अब क्या करें? सर 10 को यहाँ से आप 10 को पॉप करिए और इस Q2 में इंसर्ट करिए n माइनस 1 एलिमेंट, स्टूडेंट। सो पॉप इज कॉस्टली ना, n minus 1 element pop from here, dequeue from here and enqueue in Q2, right? And how many element remaining in Q1 is Q1 queue? Sir, only one element. You can delete this. So कौन सा एलिमेंट डिलीट हुआ बच्चे? सर डिलीट 40। सो यहाँ से भी डिलीट 40 है, यहाँ से भी डिलीट 40 है। तो डिलीशन का ऑर्डर क्या आ रहा है सर? डिलीशन ऑर्डर क्या फील हो रहा है सर? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अंडरस्टूड? So you feel just like a sorry corrected, first in first out नहीं बचे, LIFO। आपको क्या लग रहा है? LIFO। ये भी क्या है? LIFO है। ओके, ये बात क्लियर हुई ना? ये बात क्लियर हुई। फर्स्ट आपको यहाँ से निकाल के यहाँ ले जाना है, उसके बाद इसको उड़ा देना है बच्चे। तो ये LIFO जैसा ऑर्डर फील होगा, आपको लगेगा स्टैक बन गया है। यही सेम प्रोसेस आपको करना है। और आपको कैसा फील होगा सर? कैसा फील होगा बच्चे कि आपने स्टैक बना दिया। अब माय क्वेश्चन इज नंबर ऑफ पुश। अगर मैं इसमें आपसे पूछना चाहूँ कि पुश ऑपरेशन इसमें सर स्टैक में आपको n पुश करना है बच्चे, और स्टैक से पॉप m एलिमेंट पॉप करना है, सॉरी m पॉप ऑपरेशन करना है। n push operation, n pop operation, and enqueue operation is x in q। enqueue operation कितने हैं सर? x हैं इस q में, and dequeue operation y हैं बच्चे इस q में, right? So what you have to do? You have to tell sir what is the maximum and minimum value of x and y। बताओ बच्चे। तो ये कॉस्टली पॉप वाला केस है। कॉस्टली पुश कैसे होगा? कॉस्टली पुश के केस में आपको रिवर्स करके डालना होगा बच्चे एक क्यू में। अगर आप कॉस्टली पुश करेंगे तो आपको रिवर्स करके डालना होगा, जिससे पॉप आसानी से ऑर्डर ऑफ 1 में हो जाए, और पुश में ऑर्डर ऑफ n टाइम लग जाएगा, तो वो कॉस्टली पुश हो जाएगा, राइट?
नाउ द क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अगर आप इसमें स्टैक में बच्चे हम टोटल n पुश करना चाह रहे हैं और आउट ऑफ n m को पॉप करना चाह रहे हैं। तो इस क्यू में सर x एन क्यू ऑपरेशन हुए बाई डी क्यू हुए, तो एन क्यू और डी क्यू की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ये कॉस्टली पॉप का केस है, राइट? कॉस्टली पॉप का केस है। हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कॉस्टली पुश। अब आप देखिएगा, आपकी अंडरस्टैंड कॉस्टली पुश में क्या होगा? सर एलिमेंट को आप ऐसे डालेंगे क्यू में रिवर्स ऑर्डर में, जिससे आप पॉप करें ना तो लीफो ऑर्डर में पॉप हो बच्चे। तो पॉप आपका लाइट हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ वन पॉप का कॉस्ट, पुश का कॉस्ट ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा बच्चे उस केस में। ओके, पुश का कॉस्ट बढ़ जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन ये कितना होगा? अब मैं दोनों केस मिला के आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको हिंट दिया है, आगे की कहानी आप लोग पढ़ेंगे। सो ये मैं अब जनरल बात कर रहा हूँ बच्चे, ऑल केसेस के लिए। सर दोनों केस में आपको बताना है, दोनों के केस में बताना है, कॉस्टली पुश एंड कॉस्टली पॉप, दोनों केस आपको बताने हैं, ठीक है? तो क्या होगा उसका आंसर? तो बच्चे पहले तो इसका इम्प्लीमेंटेशन देखो, क्या जो हमने डिस्कस किया वो ऐसा ही किया, ये बात पहले देख लीजिए। सर इंसर्ट इनटू एनी नॉन एम्प्टी क्यू, इंसर्ट आप करना चाह रहे हैं पुश के लिए, क्या होगा? इंसर्ट इनटू एनी नॉन एम्प्टी क्यू, क्यू वन इज नॉट एम्प्टी देन एन क्यू इन क्यू वन, राइट? अगर क्यू वन नॉट एम्प्टी है तो उसी में इंसर्ट कर दो, अगर क्यू वन एम्प्टी है तो क्यू टू में इंसर्ट कर दो, ये कह रहा है पॉप में। सर इफ क्यू वन इज नॉट एम्प्टी, इफ क्यू वन इज नॉट एम्प्टी, इसका मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑल एन माइनस वन एलिमेंट, ट्रांसफर ऑल एन माइनस वन एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट लास्ट टू क्यू टू, टू क्यू टू। देन हाउ मेनी रिमेनिंग एलिमेंट इन क्यू वन बच्चे? सर एक, सर उसको डी क्यू कर दीजिए यहाँ से, तो क्या होगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा बच्चे, ठीक है? एल्स अगर ये कंडीशन ट्रू है, क्यू वन इज नॉट एम्प्टी, इट मीन्स क्यू वन इज एम्प्टी, देन एलिमेंट कहाँ है? क्यू टू में है। तो ट्रांसफर ऑल एन माइनस वन एलिमेंट एक्सेप्ट लास्ट टू क्यू वन, टू क्यू वन। How many remaining element in Q2? Sir, 1. So DQ from this Q2. So it behave just like what, sir? LIFO. It behave just like a LIFO. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बच्चे, ये एल्गो है। नाउ इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना था, वो उसका आंसर आप अब यहाँ दे दीजिए, ये लिखा हुआ है। अब आप निकालिए, डेरिवेशन करिएगा। सर सारे केसेस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इफ आई टॉक अबाउट पुश कॉस्टली, देन मिनिमम नंबर ऑफ एन क्यू कितने हैं बच्चे? ये देखो कितना है सर? एन है। सर मैक्सिमम नंबर ऑफ एन क्यू कितने हैं? सर दिस इज दिस। मिनिमम नंबर ऑफ डी क्यू कितने होंगे? सर एम। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डी क्यू ऑपरेशन ये रहा। इफ आई टॉक अबाउट पॉप कॉस्टली, ये पुश कॉस्टली जो उसका ये पॉप कॉस्टली सेकेंड वाला केस, सर मिनिमम नंबर ऑफ एन क्यू एन, एंड मैक्सिमम एन क्यू, मैक्सिमम दिस इज द एन क्यू, मिनिमम नंबर ऑफ डी क्यू इतना है, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डी क्यू ये है। सर ओवरऑल इन दोनों में मैक्सिमम मिनिमम क्या है बच्चे? सो ओवरऑल इन दोनों में मैक्सिमम मिनिमम ये रहा। फॉर्मूला ओवरऑल मिनिमम मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, दिस इज द आंसर। अगर हम कुछ नहीं कहें, अगर हम ये कहते हैं कि सर पॉप कॉस्टली उसमें बताइए या पुश कॉस्टली उसमें बताइए, तो उस केस में ये रहे आपके आंसर्स। अगर किसी ने कहा पुश कॉस्टली, उसके लिए क्या होगा? मिनिमम नंबर ऑफ एन क्यू, मैक्सिमम नंबर ऑफ एन क्यू, मिनिमम नंबर ऑफ डी क्यू, मैक्सिमम नंबर ऑफ डी क्यू। अगर किसी ने कहा पॉप कॉस्टली क्या है, तो मिनिमम नंबर ऑफ एन क्यू क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ एन क्यू, एंड मिनिमम नंबर ऑफ डी क्यू, मैक्सिमम नंबर ऑफ डी क्यू। ये ओवरऑल इन दोनों में अगर किसी ने कुछ नहीं कहा, उसने कहा सिंपली क्यू में मुझे बताइए। N is a number of push operation on the stack. M is a number of pop operation on the stack. We need minimum and maximum number of NQ operation on Q. Call this X. Minimum and maximum number of DQ operation on Q. Call this Y. ओके, सो इस केस में क्या होगा बच्चे? ये रहे फॉर्मूला, इनको आप यूज कर सकते हैं। डेरिवेशन कैसे होगा? ट्राई योरसेल्फ, एक बार ट्राई करिए। टाइम हमारे पास कम है, अदरवाइज डेरिवेशन बताते हैं। ओके, सो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल दोनों केसेस में मिनिमम एन क्यू कितना होगा बच्चे? ओवरऑल कुछ नहीं कहा जाए, अगर कुछ नहीं कहा जाए किससे इंप्लीमेंट करना है? कॉस्टली पुश से, कॉस्टली पॉप से। तो मिनिमम नंबर ऑफ एन क्यू एन होगा। सर एन क्या था वहाँ लिखा हुआ है? एन ये लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पुश ऑपरेशन ऑन द स्टैक। मैक्सिमम नंबर ऑफ एन क्यू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू कितना होगा बच्चे? ये क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ एन क्यू। मिनिमम नंबर ऑफ डी क्यू क्या है? सर एम।
So what is m here? Number of pop operation, and maximum number of dequeue n into n minus 1 by 2 plus m. So maximum number of dequeue operation. Okay. तो बच्चे आज की क्लास हम यही करते हैं। क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करिएगा, प्रैक्टिस हो जाएंगे। क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है पी वाई क्यू। ओके, सो दैट्स ऑल इन टुडे क्लास। ओके बच्चे, इस क्लास को दोबारा देखिए अगर किसी का डाउट है, एंड इस क्लास को पोस्ट भी करिए लिंक्डइन पर, जस्ट लाइक उद्धव जैसे कर रहे हैं। ओके आप सभी लोग पोस्ट करिए, 30 नवंबर तक पोस्ट करेंगे तो जीएफजी की तरफ से भी आपको कुछ गिफ्ट हैं, कुछ प्राइजेस हैं, गिफ्ट वो आपको मिलेंगे, राइट स्टूडेंट। ओके और दिस अगर किसी का कोई डाउट हो इससे तो आप नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछिएगा। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास स्टॉप किया जाए। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।